मर रहा है किसी के लिए चिंता नहीं करता है. When a person is living, they're suffering. When a person is living, they're having some suffering. तो भौतिक जगत में कोई भी जिएगा उसको कुछ न कुछ तो तकलीफ तो होगा, कष्ट होगा. Out of sentiment, we can feel compassion about their suffering condition. तो हम कुछ भावुकता से हम भी उनकी जो चिंता है उसके बारे में भी हम भी थोड़ा सोच व्यक्त कर सकते हैं. Now, when a person is dead, the idea is you feel bad that they're dead. How can you feel bad that they're dead? I mean, anyway, people feel bad that they're dead. कभी कभी कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके बारे में थोड़ा चिंता व्यक्त करते हैं, ये व्यक्ति अभी मर गया ऐसा. लेकिन let's look at that rhetorical question. How can they be affected when someone's dead? तो अगर हम सोचते हैं कि कोई मर जाता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? And there's lots of evidence. When people die, everyone laments on the behalf of the person. Oh, they're dead. Oh, no. They're dead. They're dead. Oh, no. They're lamenting. They're dead. They're dead. They're dead. That's all they do. What? So what? It's clearly the mode of ignorance. तो हम देखते हैं हर जगह पर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके लिए बहुत उसकी तरफ से चिंता व्यक्त करते हैं, ये मर गया है. लेकिन मरने से क्या होगा, क्या होने वाला है? So this is where Krishna starts, right? Living, dead. What's the difference? तो यहाँ पर भगवान अपना जो ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति या जीवित व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? It's the presence of the soul. Presence of the soul animates the body, like a puppet. जो ये जो आत्मा है शरीर में, वास्तव में ये आत्मा की वजह से ही शरीर चलता है, फिरता है. And you take the battery out. Take the battery out. It's dead. It's dead. Oh no! Oh, it's dead. Put a battery back in. Now we're happy, right? तो जैसे वो मोबाइल में अगर आप बैटरी निकाल दिए तो वो मर जाता है, लेकिन बैटरी लगाएंगे फिर तो जीवित हो जाएगा. The battery is a life force for the machine. It has energy in it. तो जैसे जो यंत्र के लिए जो बैटरी है वो जीवन है उसके लिए. And the presence of the soul is the source of energy for the body. तो आत्मा का रहना इस शरीर के लिए जीवन है. Part and parcel of Krishna. ये जो आत्मा है भगवान का अंश है. And you thought you got your energy from, exercising or eating or some other medicine. You think you're getting your energy from that sunshine. That's the body gets energy. It can process. It's a machine for processing. But the source of the energy that creates the capacity to process is the soul. तो ये जो हम सोचते योगा करेंगे, नहीं तो सूरज की रश्मि में खड़े होंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, ये सब शरीर के लिए जाता है. लेकिन इस शरीर को ये सब स्वीकार करके शक्ति लाने का जो वास्तविक शक्ति आत्मा से आता है. Yeah. Krishna's beautiful arrangement that the body is able to maintain itself around the soul. तो ये कृष्ण का अद्भुत कार्य है कि जो शरीर आत्मा के चारों तरफ, आत्मा के ऊपर वो अपने आप को रखे. Now there will be much more detailed information following. Krishna will explain more in detail about the difference between the presence of the soul and the absence of the soul in the material body. तो आगे चल के भगवान बताते हैं कि आत्मा के बारे में, शरीर में आत्मा कैसे है और क्या क्या उसका गुण है, ऐसा बताएं. So the wise lament neither for the living nor the dead because they are in knowledge that the life force has nothing to do with the body, which appears to be dead when the soul leaves, but actually it's been inert from the start.
तो जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो उनको पूरी तरह से ये बात पता है कि ये शरीर में आत्मा है। जब शरीर चले जाएगा तो आत्मा चले जाएगा तो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता है। तो हालांकि शरीर हो, शरीर में आत्मा हो ना हो, शरीर तो हर समय जड़ पदार्थ ही है। Read the verse again. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. We're talking about our perspective of others. That's very, that's pretty removed from our own experience. That's a different perspective. We look at other people and say, oh, you're lamenting about others. Your father, Prabhupada uses this example. Oh, your father is dead? Why are you lamenting? The father that you loved, he's lying right there. What is it? You're saying your father is gone? Why? Why he's gone? He's right there. The father that you loved so long is lying here. Why are you crying? He's gone. What is gone? तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, आप रो रहे हैं कि आपका पिताजी चले गए, लेकिन जो आपका पिता है वो तो यहाँ पर है, उनका शरीर यहाँ पर पूर्ण तरह से यहाँ पर है। तो कैसे क्यों रो रहे हैं? आपका पिताजी यहाँ पर है तो कौन गया है? इस बात को आपको पता है क्या? क्योंकि आपको पिताजी तो यहीं पर है। In this way, it's pointed out that external shell, the form, body, that's not the person. तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि ये शरीर जो बहिरंग रूप से है, ये जो एक कवर की तरह है, ये वास्तव में व्यक्ति नहीं है। And even a person who's lamenting about the death of their dear relative, if they're asked those questions, why are you lamenting? He's right here. Why are you saying he's gone? They already know. They're saying it. He's gone. He's not there anymore. So what you've loved your whole life is known, even to the person in the mode of ignorance, but they're oblivious. They're crying over the absence of their father. The bodily concept is surpassed, but they're missing the whole thing. That's why it's important to ask this question. तो यहाँ पर बात ये है कि हालांकि वो अज्ञान में है, लेकिन उनको ये बात पता चल रहा है कि जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा श्री श्री गौरीकाय जय। तो इस बात, हालांकि वो अज्ञान में है, लेकिन उनको ये बात पता चल रहा है कि शरीर है यहाँ पर, लेकिन जो आत्मा है उसमें से चले गया है। लेकिन फिर भी वो लोग सोच रहे हैं, फिर भी वो लोग अज्ञान के होने के कारण से वो शरीर को देखकर वो रो रहे हैं। That's basically it. But there's another area of recognition that should be considered very carefully. तो और एक दूसरा एक ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। When you look at yourself, जब आप अपने आप को देखते हैं, or when you feel yourself, अपने आप को अनुभव करते हैं, this is when the real test starts happening, when it's introspective. जब हम यहाँ पर हमारा जो सच्चा परीक्षा यहाँ पर शुरू होता है, जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। It's wavering, it's changing, it's going through certain cycle of thought. तो यहाँ पर जो हमारी जो सोच विचार है, ये बदलते रहता है। Yeah, it's the effects of the modes of material nature on the mind and intelligence.
तो ये जो 3 गुण की प्रभाव है हमारे मन और बुद्धि के ऊपर। The 3 modes of material nature affect one's identity. जो 3 गुण है वो हमारी अस्तित्व को भी वो प्रभावित करते हैं। So very commonly we tell people and each other, you know, Prabhu, you're not your body. तो हम You know that, Prabhu. साधारण तरह से हम बोलते हैं कि सबको कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। You're not your body. हम बोलते हैं आप शरीर नहीं है, आत्मा है। You're not your gross body, and you're not your subtle body, meaning mind and intelligence, and you're not your false ego, which is also material. तो हम कहते हैं कि आप ये स्थूल शरीर नहीं है, या आप मन बुद्धि नहीं है, आप अहंकार नहीं है। And after about 50 years of reminding each other that you're not something, it's about time to start using the positive approach a little bit. तो हम 50 साल ऐसे कहते कहते आप ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम उसमें जो पॉजिटिव मतलब उसमें जो सच एक तरह का दूसरी दिशा से हम उसको देख सकते हैं। You don't hear Chaitanya Mahaprabhu, he doesn't say you're not your body. चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि आप शरीर नहीं है। He says, you're an eternal spirit, soul, servant of the Supreme Personality. उन्होंने कहा कि आप शाश्वत जो भगवान के अंश है और भगवान के सेवक है। That's transcendental perspective. जो वो दिव्य स्तर की बात है। You're not your body is a negation. Really? Whose body am I? तो ये आप ये शरीर नहीं है, ये बोलना नेगेटिव नकारात्मक दृष्टि। The structure of the joke is, you know, you're not your body. He says, oh, if I'm not my body, whose body am I? कोई व्यक्ति कहता है कि ये आपका शरीर नहीं है, तो लोग बोल सकते हैं तो मैं किसका शरीर है? Yeah, because they're completely in the body. And other countries, they know they're not their material body. Other countries, cultures, they already know that. You tell them, so what? I know that. तो कुछ देश में अगर ऐसा कहेंगे तो वो बोलेगा हाँ मुझे पता है, तो क्या करना है? But if you say you're not your mind or you're not your intelligence, then I'm not. अगर आप कहेंगे आप मन नहीं है या बुद्धि नहीं है, तो वो लोग थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे। You can create confusion on people's part by negation. It's not sufficient answer. तो ऐसे नकारात्मक दृष्टि अगर प्रदान करेंगे तो उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। And when you look at your reflection in the mirror, you may also think, you know, at 1 minute you're thinking, my speaker, Sachila, looks good. I'm ready to preach. तो अगर हम अपने आप को भी जब आईने में देखते हैं तो हम एक दृष्टि से देखते हैं कि हम बहुत अच्छा सजाया है, अभी हम अच्छा बाहर जाएंगे। Another time you think, no, what is this? I'm trapped inside. What am I going to do? और दूसरे समय हम देखते हैं कि हम ये शरीर में फंसे हुए हैं, बहुत कष्ट है हमारे लिए। And yeah, I mean, I myself sometimes. Is death coming? I hope so. Oh, he's late. Oh my. कभी कभी मैं भी बहुत जब बीमारी में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या मृत्यु आ रहा है, क्या समय हो गया। It's still attachment to the body. Yeah, if you think, oh well, death's the end of everything, I'll be happy when death comes. Oh, I've been waiting for you. Come on, let's go. क्योंकि अभी भी हमको बहुत ही आसक्ति है ये शरीर से, इसलिए हम इतना आसान से जब मृत्यु आता है तो इंतजार नहीं करते हैं। I have to carry this another day, you know, big deal. Oh. More, it's like a heavy chadar in the summer. You don't want it. Big woolen chadar, and you have to wear it all year long. तो ये शरीर को लेके अभी बहुत लेके उसको जाना पड़ता है,
ऐसा है कि जब धूप काल में बहुत बड़ा चादर हमारे ऊपर में डाल दिया तो उस तरह। That's why the positive preaching statement is effective and enlivening to the preacher and to the preached. So those who are receiving the preaching. तो जो सकारात्मक और उत्साहित बात हम प्रचार करते हैं उसको ऐसा करना चाहिए। Your eternal spirit soul, आप शाश्वत आत्मा हैं, free of material designation, भौतिक गुण से परे है। and you are job description, job description. You are eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the all-attractive आप जो शाश्वत reservoir of pleasure. आप भगवान कृष्ण के शाश्वत दास हैं, जो भगवान कृष्ण सर्व ऐश्वर्यमान और सर्व आकर्षक है। The service you do with your body is what paves the way back to Godhead. जो आप ये शरीर से जो कार्य करते हैं, इससे आपका जो प्रगति आपके लिए फल मिलता है। It's the playground in which you exercise your devotional existence. तो ये एक तरह का मैदान है जिसमें आप भक्ति को खेल सकते हैं। It's temporary. It closes after dark. ये तात्कालिक है। Like any good park. Every park is closed after dark. ऐसे हर मैदान को बंद कर देते हैं, ये भी एक दिन बंद हो जाएगा। So it's closing time now. Thank you very much for your attention. Srimad Bagavadgeetha is done. Any questions, criticism, correction, comment? Yeah. One quality of satisfaction. Quality of satisfaction. Satisfaction. Yeah, you said it is in the mode of goodness. But sometimes you said devotees means they are always satisfied. Can you comment on that? Elaborate on that. How do you achieve satisfaction or maintain satisfaction? See, satisfaction is a material quality. Okay. You said it is in the mode of goodness. So devotees are above, beyond this satisfaction. That's true. Well, there's mind. Yeah, better translate the question. तो संतुष्ट होना, प्रभु जी ने बताया अभी वो भौतिक गुण है, मतलब जो अभी 3 गुण के बारे में बताते हुए सत्व गुण नहीं है जो संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो भक्त है वो संतुष्ट से भी ऊपर रहते, तो उसका मतलब क्या है? Now I understand. Yeah. Okay. Just as there's material mind, but there's also spiritual mind. There's material intelligence, and there's also spiritual intelligence. There's false ego, but there's actually ego. Spiritual identity. Ego just means identity. So also there's satisfaction on the mundane level, and then there's spiritual satisfaction. तो जैसे भौतिक गुण रहते हैं, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, भौतिक अहंकार है, उसी तरह भौतिक संतुष्टि होता है। और इस तरह जैसे आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, उसी तरह आध्यात्मिक संतुष्टि भी होता है। There's sattva-guna. We use it for sattva-guna. It's a mode of business. जो सत्वगुण है, मोड़ा गुण है। And there's siddhi-tattva. Siddhi-tattva is a pure mode of business. और transcendental mode of business. शुद्ध सत्व है, वो पूर्ण तरह से परिपूर्ण सत्व है। Satisfaction